एक मर्तबा का जिक्र है कि जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था जिसका नाम मीनू था। मीनू बहुत एक मर्तबा का जिक्र है कि जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था जिसका नाम मीनू था। मीनू बहुत शरारती था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन मीनू को पता चला कि जंगल के किनारे एक नया बाग खुला है जिसमें बहुत सारे मीठे फल हैं। मीनू ने सोचा, वाह, मैं जाकर वो फल खाता हूँ। वो इछलता कूदता बाग की तरफ चल दिया। जब वो बाग पहुंचा तो उसे गेट के पास एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, सिर्फ वही दाखिल हो सकते हैं जो पहले इजाज़त हूँ लें। मीनू ने सोचा, मैं इतना छोटा हूँ, मुझे कौन रोकेगा। वो जल्दी से बाग के अंदर कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने एक सीप तोड़ने की कोशिश की, एक बड़े तोते की आवाज़ आई, रख जाओ, तुमने इजाज़त नहीं ली। मीनू शर्मिंदा हो गया और तोते से माफ़ी मांगी। तोते ने कहा, अगर तुम इजाज़त ले लो तो मैं तुम्हें बाग की सैर करवाऊंगा और सबसे मीठे फल भी खाने दूंगा। मीनू ने फौरन इजाज़त मांगी और तोते ने खुशी खुशी उसे बाग की सैर कराई। मीनू ने न सिर्फ मज़ेदार फल खाए बल्कि एक सबक भी सीखा कि इजाज़त लेना और उसूलों की पाबंदी करना ज़रूरी है। उसके बाद मीनू हमेशा दूसरों से इजाज़त लेने लगा और सबके दिल जीत लिए। सबक: हमेशा उसूलों का एहतराम करें और दूसरों की इजाज़त के बगैर कुछ न करें।